is supportive in some way of the Taliban. Now, I don't know if you saw, but on September 5th, Trump actually signed an executive order, and it was something like state sponsor of wrongful persons. Did you see this? Mm-mm. So anyway, it was an executive order to put different pressures on countries holding Americans. It would be like cut off the money you're sending to them, block people with U.S. passports traveling there, etc. So they have this law in the books, and they're not using it against the Taliban. Well, why wouldn't you be using it against the Taliban? It was written to get Americans out of wrongful custody. We have 2 Americans alive in Taliban custody, and then we have a third that likely is dead, and we need his body returned. So you have a law in place, and you can use it in Gaza, you can use it in Venezuela, but you can't use it in Afghanistan. So that's super, super frustrating. Who are they? So we have obviously Mahmoud Shah Habibi, who I've told you about. The Al-Qaeda is charging him with the death of its last leader, Dr. Ayman al-Zawahiri. So he's being tortured and all that type of stuff. And then we have Dennis Cole. He's an older American. So Dennis Cole's been in custody literally the last year. Nobody's hardly said anything about it. Like just last month, his family, I think, started talking about it. But Taliban, I don't even know if they've charged him with anything. So they clearly have no working court system. And then, unfortunately, the last person's Paul Overby. And I don't know if you know, he was a writer, and he actually wrote about the first Afghan war. So he put out a book, I think it was like Holy Blood in the 90s, and he wrote about the Soviet Afghan war. Well, he was back over there. This is a long time ago now. He's been in custody, or he's deceased, for 11 years. So he went back over to do research for his book. He left Afghanistan, traveling to Waziristan to interview Sirajuddin Haqqani, who helped capture Mahmoud Shah Habibi, and then he went missing. So they thought originally he was dead. And then do you remember that jerk David Rhodey? No. So there was this guy, I swear he purposely got captured by the Haqqani. So American David Rhodey, and he was captured, and then all this stuff went on. These people paid off a bunch of people, and he gets released. So he gets released. Actually, Boone was on the team that picked him up when he got released by the Haqqani. So people think he was rescued. He wasn't. He was released for a ton of money. So anyway, when he comes out, he says, I saw Paul in custody. So that was about 2019. But there are a lot of people, he's in his 80s now, Paul. So a lot of people think he's deceased. So the U.S. government wants like his remains in his case. So we know 2 are alive for sure. But again, no American knows any of these names, except maybe Habibi, because I've said it a couple of times, but it's very, very frustrating. That's like no one cares. The other part is, so Habibi luckily has a $5 million bounty. There was a $5 million bounty to get Paul. Dennis, there's 0 bounty. How do you not have a $5 million bounty to return him if you have a $5 million bounty for the other 2? Our hostage diplomacy is one of the craziest things you've ever seen. There's like no plan. It's all over the place. Terrorists get anything they want. How can nobody be talking about the fact that Taliban is holding American hostages while we pay them $87 million a week? And we have a law that can stop the money today, the one passed in September, if they're holding an American. And the White House is interfering with this too? Yes. They're allowing this to continue with the Taliban. This weakness towards the Taliban is like one of the most insane things I've ever seen. And remember, one of these Americans is literally being tortured. Like they've had to bring him to the hospital to revive him to continue his torture. Holy shit. I mean, it's one of the most frustrating things. And then even a lot of people in the government are like, we don't know if he's still alive. Dude's still alive, but he's barely hanging on because you guys won't fucking make a deal to get him released. I hope you do an episode on this. It's super frustrating. It's just... I mean, the whole hostage diplomacy, you really should bring some people in, some of these families, or some people go do the negotiations. It is an entire train wreck. And we knew this years ago. Do you remember Kayla Mueller? Mm-hmm. So she was the one, the head of ISIS was holding her, right? I think it was Baghdadi, and she was unfortunately probably his sex slave or whatever. And the State Department told the family, don't say she's kidnapped. And they waited forever. And then they made all this stuff. And she ended up dying, right? And then the family came out after and said all the crazy stuff that went wrong. Bob Levinson's another great example, who died in Iranian custody. You know, they even passed the law because that went so bad. So hostage diplomacy is just insane.
Like, we do not do this properly. And remember, these are Americans that we're trying to save in these places. Dude, I just, you know, oh, when man. we gave those billions to Iran, we literally didn't make a contingent on Bob Levinson, who was alive then, being released. So we're handing this cash to all these people as they hold America. वैल्यू है वो 1,000 एयरलाइंस के पास जहाज नहीं है कोई बहुत प्रीमियर कुछ रेंटल सर्विसेज हैं जिनके पास थोड़े थोड़े 2-3 जहाज होंगे पंजाब एयर तो खैर उसमें आती नहीं है लेकिन जरा सुन लीजिए किस किस्म के लोगों के पास ये जहाज है जो हम पंजाब एयर ले रही है प्लानिंग से रियली इंप्रेसिव एली लिली एंड कंपनी ये बहुत बड़ी फार्मा जायंट है उसके पास ये जहाज है और उस कंपनी की जो वैल्यू है वो 1,000 बिलियन युआन 977.37 बिलियन डॉलर्स है 1,000 अरब डॉलर्स बैंक ऑफ अमेरिका के पास है ये उसकी जो जनाब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 380 बिलियन डॉलर जनरल डायनामिक्स के पास है मल्टी बिलियन कॉर्पोरेशन कतर एग्जीक्यूटिव कतर का पाकिस्तान पे बड़ा हम इंप्रेस होते हैं उनके पास भी जहाज है जो सिर्फ रूलिंग फैमिली और गवर्नमेंट वीवीआईपीज के लिए इस्तेमाल होता है बेनेट डोरेंस ये यूएस बिलियनर है ये जो कैम्पबेल सूप के आप देखते हैं वो कैन वगैरह ये उसका फॉर्चून इनहेरिटर है इसकी नेटवर्थ है 2.8 बिलियन यूएस डॉलर्स स्टीवन टिश को-ओनर ऑफ न्यूयॉर्क जायंट्स बहुत बड़ी टीम है और वो उसकी भी कोई 1.5-2 बिलियन डॉलर अपनी जाती उसकी चीज है लार्सन एंड टोब्रो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है जिनकी अपनी वैल्यू जो है वो 6 खरब इंडियन रुपए है यानी कि हमारे से डबल कर लें ये वो लोग हैं ये मैंने आपको सिर्फ 5-6 लोग बताए हैं कि क्या कंपनीज बताई हैं जिन्होंने लिया हुआ इनमें से कोई एयरलाइन नहीं चला रहा इनमें से कोई नहीं कर रहा ये एक टॉप क्वालिटी एग्जीक्यूटिव एयरक्राफ्ट है ये एयरलाइंस के लिए नहीं है ये रेंटल्स नहीं है तो ये भी इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा उन्होंने कहा कि आप तनकीद करने दें आखिर में ये बता दें कि हमने एयर लिफ्ट के लिए मरीज लोगों को लिफ्ट करके लाहौर या पिंडी के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए किया है और पायलट जो हेलीकॉप्टर है वो भी इसी पर्पस के लिए डेडिकेट किया जाएगा तो इसलिए लोग तनकीद करते रहे हम काम करते रहे ये उनका कहना है कंट्रोवर्सी देखिए नवाज शरीफ साहब के मौलिज उनके साथ रहते थे यानी साथ रहने से मुराद ये कि जब उनकी तबीयत खराब होती थी भुट्टो साहब के ज़माने में डॉक्टर न्याजी जब उनके दांत का मसला होता था तो बुला लिया जाता था ये एक बहुत ही नॉर्मल सा कोर्स होता है और इसमें जाहिर है आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की इस पे निगाह होती है कि वहाँ कोई पॉलिटिकल अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि डॉक्टर न्याजी की विजिट की वजह से शायद इफ आई एम असैसिनेटेड में कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनका भी था लेकिन खैर बाद भी एक कंट्रोवर्सी देखिए नवाज शरीफ साहब के मौलिज उनके साथ रहते थे यानी साथ रहने से मुराद ये कि जब उनकी तबीयत खराब होती थी भुट्टो साहब के ज़माने में डॉक्टर न्याजी जब उनके दांत का मसला होता था तो बुला लिया जाता था ये एक बहुत ही नॉर्मल सा कोर्स होता है और इसमें जाहिर है आफ्टर ऑल गवर्नमेंट की इस पे निगाह होती है कि वहाँ कोई पॉलिटिकल अब मैं आपको अगर ये बताऊं कि डॉक्टर न्याजी की विजिट की वजह से शायद इफ आई एम असैसिनेटेड में कुछ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन उनका भी था लेकिन खैर बाद भी एक कंट्रोवर्सी देखिए देता हूं
हुकूमत ने अभी रमजान पैकेज का ऐलान किया है, 10,000 रुपए मिलेंगे। हाँ जी। और कहा जा रहा है कि फीकस कुछ 10 लाख लोगों को, मेरे ख्याल में कितने 4 लाख लोगों को, नहीं 10 लाख घरानों को मेरा ख्याल है। अच्छा। 10 लाख लोगों को या 10 लाख फैमिलीज को। अच्छा, अगर 10 लाख फैमिलीज को मिल रहे हैं और अगर एवरेज एक फैमिली के अंदर 5 से 7 लोग हों तो ये कोई महल बन गए, कोई करोड़ के करीब लोग बनते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये वो है जो बड़ी उसके बाद पहुंचते हैं उन तक है। एक ऐसा सूबा जिसमें हुकूमत खुद मान रही है कि रमजान पे करोड़ों लोगों को भूखे रहने के वजह से हम रिलीफ पैकेज देंगे, ठीक है ना। यानी एक गरीब तरीन सूबा हो गया ना जहाँ पे रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, उसमें आप तैयारे खरीद रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के लिए आप गाड़ियां खरीद रहे हैं। रजी साहब ने जो अभी बात की कि खुर्दनी तेल आप 250 से या 200 से ले जाए 650 तक, फिर 650 से 450 पे लाके कह के महंगाई नीचे आ गई। बल्ले भी बल्ले थोड़ी महंगाई थल्ले आंदे होते हैं, इसे महंगाई कहते हैं नीचे लाना। फिर ये कि आप हम कह रहे हैं ना हमने बड़ा मार्शी कर लिया, वो यूएई दे 2 अरब डॉलर ते दे दो, वो जड़ ताड़े मगर चढ़े हैं। अगर आप हम इतने ही हम वो हो गए हैं तो दे दे 2 अरब। 4 पिछले 6 दिनों से स्टॉक सोर्स है, उससे हमें पता चला है कि मरियम साहिबा चूंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ इस्तेमाल करती हैं अपने दौरों के लिए और टैक्स पेयर का अगेन पैसा, बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिकल और बहुत क्रिटिकली इस चीज़ को इस पे बात करते हैं, बहुत तनकीद उनको सामने इस चीज़ पे है, लेकिन वो बहरहाल उस चीज़ से रुक नहीं रही हैं, उनको असर नहीं हो रहा है इस बात का। लेकिन मरियम साहिबा जो है वो उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया है कि उनके कैबिनेट के लोग जो है उनके साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी टीम के बड़े सारे लोग हैं, तो उनके लिए उनका जहाज़ जो है वो छोटा पड़ता है और लिहाजा वो पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज़ इस्तेमाल करना पसंद करती हैं, टैक्सी की तरह वो जिस तरह जारी होती हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ में। लेकिन मरियम साहिबा के हवाले से ज़राए हमें बता रहे हैं कि उनको पाकिस्तान एयरफोर्स की जो जहाज़ के अंदर की जो सीट कवर्स है उसका कलर पसंद नहीं आया और चूंकि वो रंग उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने रंग तब्दील करने का कहा और रंग तब्दील कर दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के उस जहाज़ के अंदर की सीटों का जो कवर है उस कवर के कलर चेंज कर दिया गया, कवर को तब्दील किया, उसमें तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और माशाल्लाह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो कि चाहती थी कि जब वो ट्रैवल करे तो उनके मनपसंद जो है वो सीट कवर्स हों, उसका कलर जो है वो उनके टेस्ट के मुताबिक हो, स्टाइलिश हो और बहरहाल वो चीज़ मनूअन उस पर अमल हुआ और इसके साथ साथ ही 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए जो कि आप गरीब टैक्स पेयर का पैसा है। और उस एयर पंजाब में 7 एयरक्राफ्ट होंगे और 2 साल के बाद Suno. And ICCPR Article 10(1) requires that all persons deprived of their liberty, example, imprisoned, be treated with humanity and with respect for inherent dignity. The UN Human Rights Committee has also explained Article 10.